Biochemistry from Satyanarayana, chapter number 15 हम कर रहे हैं, which is about the metabolism of proteins. और आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. सो मैंने ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि व्हेनेवर वी से अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, दिस इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द वर्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, द जनरल एस्पेक्ट्स की जो आज की वीडियो है, इसमें वी विल टॉक अबाउट सम, एज द नेम इंडिकेट्स, सम जनरल एस्पेक्ट्स और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस हैं जो तमाम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बार बार वो जिक्र उनका आएगा और वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल ट्रांसएमिनेशन है, डीएमिनेशन है, और ट्रांसएमिनेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स चाहिए. सो ये हम आज ही के वीडियो में फिक्स कर लेंगे, सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग आज इस्टेब्लिश कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम यूरिया साइकिल कर रहे हों और प्रोटीन की एडवांस मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे हों तो मुझे बार बार ये ना बताना पड़े कि व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन, व्हाट इज डीएमिनेशन टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. The amino acids undergo certain common reactions like transamination followed by deamination for liberation of ammonia. So that's the end product, ammonia, but the amino acids are undergoing through a few reactions such as transamination, the deamination, and ultimately they produce ammonia. The amino group of amino acids is utilized for the formation of urea. So the urea which is being produced is ultimately coming from the amino group, obviously, of the proteins. And this is the excretory end product of the proteins that we have in the body. So protein metabolism का जो ultimate excretory product है जो body से निकलता है, it's the urea. The carbon skeleton of amino acid is first converted into keto acid. Now that is an important one. Okay, so the amino acids, obviously you know it, they are composed of some carbon skeleton, and attached with the carbon skeleton are some other groups such as amino group, carboxylic acid group. तो ये जो कार्बन स्केलेटन है, एक रिएक्शन ट्रांसएमिनेशन एंड द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड. सो कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू कीटो एसिड इज द रिएक्शन व्हिच इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन. सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन. ओके, एंड ये जो कीटो एसिड्स बनते हैं, दे कैन देन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो फॉर एग्जांपल द कीटो एसिड्स कैन बी यूज्ड for generation of energy. They can also be utilized, B, for generation of glucose, C, for generation of fats, as well as for formation of other non-essential amino acids. So, and you know that the non-essential amino acids are those amino acids which are produced inside the body. So you don't have to take them in the diet essentially. Okay. So these are the fates of keto acid. Keto acid कहाँ से आया? Keto acid आया from the amino acid. कौन से reaction के जरिए? ट्रांसएमिनेशन के जरिए. सो ट्रांसएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन से अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो गए इनटू कीटो एसिड्स. नाउ दीज कीटो एसिड्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, produce glucose, produce fats, or produce non-essential. So these are the 4 different fates of keto acids. So अगर आपसे इतना bit पूछा जाए, so that's simple memorization type of stuff. कि amino acids are converted into keto acid by a process called transamination, and the keto acids can be used for these 4 purposes in your body. And so ये picture अभी हमने देखी, we discussed the same picture just a minute ago. The details of the general and specific metabolic reaction of amino acids are described in the following pages. So let's talk about transamination in a little more detail. Transamination, the transfer of an amino group from an amino acid to form a keto acid, is known as transamination. So that's what is the definition. This process involves the interconversion of a pair of amino acid and a pair of keto acid catalyzed by a group of enzyme known as transaminases. तो ये आसान चीज़ है कि ट्रांसएमिनेशन की पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है. सो ट्रांसएमिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस जिसमें अमीनो एसिड्स, ये भी एसिड है, आर कन्वर्टेड इनटू keto acids, ये भी एसिड है. सो अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड्स, एंड ये रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको हम नाम देते हैं ट्रांसएमिनेजेस. इजी टू अंडरस्टैंड. ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस है तो ट्रांसएमिनेजेस, या दे आर आल्सो नोन एज अमीनो ट्रांसफरेजेस बिकॉज दे बेसिकली ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप बिटवीन द कार्बन एटम्स. ओके, सो ये जनरल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, एंड इट्स प्रीटी इजी, इजंट इट? सो वी हैव एन अमीनो एसिड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कीटो एसिड, and if you look at the generic formula for them, so here is the alkyl group, that's the alpha carbon जिसमें amino group लगा हुआ है. so amino group
कहीं निकल गया और अब यहाँ पे कीटो ग्रुप आ चुका है, इसीलिए द अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अ कीटो एसिड, और ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसएमिनेशन, और यहाँ जो एंजाइम यूज होंगे वो कहलाएंगे ट्रांसएमिनेजेस। दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी। अच्छा, अब यहाँ से जो अमाइनो ग्रुप निकलेगा वो हो सकता है किसी और कीटो ग्रुप को जाके रिप्लेस करके एक और अमीनो एसिड, तो ये साइकिल चलता रहता है कि अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड्स एंड कीटो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। सो ये है पूरा ट्रांसएमिनेशन की स्टोरी, क्योंकि हो ये रहा है कि जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है, निकाल के वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस तो ट्रांसएमिनेशन कहला रहा है। बट ये जो अमाइनो ग्रुप निकला है ये कहाँ जाएगा? ये किसी न किसी कीटो एसिड को जाके वहाँ ट्रांसएमिनेशन का जो प्रोडक्ट था यानी अमाइनो ग्रुप जो रिलीज हुआ था वो कीटो ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो ग्रुप के अंदर। सो ये पूरा ट्रांसएमिनेशन का साइकिल है। यहाँ से जो निकला कहीं और जाके फिक्स हुआ, ये अमाइनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये कीटो एसिड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। एंजाइम जो बीच में यूज हुआ उसका नाम है, या आप उसे कहें ट्रांसएमिनेजेस या आप उसे कहें अमाइनो ट्रांसफरेजेस, एक ही बात है। ओके, Now some salient features of transamination, all the transaminases यानी जो enzymes हैं, they require something which is pyridoxal phosphate PLP, which is a coenzyme derived from vitamin B6. So vitamin B6 is essential for all the transaminases. So if there is vitamin B6 deficiency, imagine पूरा protein metabolism disturb हो जाएगा. A specific transaminases exist for each pair of amino and keto acids. However, only two, namely aspartate transaminase and alanine transaminase, make a significant contribution for transamination. So, aspartate transaminase and alanine transaminase are the main ones throughout the body. AST and ALT, liver enzymes में भी हम इनको check करते हैं, if you know that. LFT इसके important component है. There is no free amino group liberated, only the transfer of amino group happens. So, ये जो picture मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि amino group निकलता है और कहीं घूम फिर रहा होता है as free amino acid. What's basically happening? इसके ये जो अमीनो ग्रुप है वो इस कीटो ग्रुप पे आ जाता है और ये कीटो ग्रुप बन जाता है अमीनो ग्रुप, और ये अब अमीनो ग्रुप चूंकि निकल के यहाँ चला गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटो ग्रुप में। तो एक अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू कीटो एसिड, दूसरा कीटो एसिड कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। Transaminases required pyridoxal phosphate, which is a B6 related stuff. Okay, and very important point that transamination is absolutely reversible, so things can go back easily. Transamination is very important for redistribution of amino group. अब आप इमेजिन करें कि ये जो वो बचपन में गेम खेलते थे यार, जिसमें मुझे उसका नाम एक्चुअली देखो याद नहीं आ रहा अभी, उसमें होता ये था कि एक बंदा यहाँ भाग रहा है, उसके हाथ में एक स्टिक है, आगे उसका दूसरा साथी खड़ा हुआ है, ये जब भाग भाग के यहाँ तक पहुँचेगा तो वो स्टिक इसके हाथ में दे देगा, अब ये भागना शुरू कर देगा, अब स्टिक इसके हाथ में आ गई, आगे एक और बंदा इसका वेट कर रहा है तो ये स्टिक इस तक पहुँचाएगा। मुझे यार कॉमेंट सेक्शन में ना इस गेम का नाम ज़रा बता देना कि इस गेम को कहते क्या है। यहाँ भी ट्रांसएमिनेशन में यही हो रहा है कि ये अमीनो ग्रुप को निकाल के ट्रांसफर किया जा रहा है इस जगह ताकि ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इट्स एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। दैट्स इंटरेस्टिंग। आप कहेंगे यार अमीनो एसिड तो था उसमें से अमीनो ग्रुप निकाला क्यों? भाई निकाला इसलिए क्योंकि ये अमीनो ग्रुप निकल के यहाँ आएगा तभी तो ये अमीनो एसिड बनेगा, तो इस अमीनो एसिड के बनने के लिए ये ट्रांसएमिनेशन जरूरी था। ओके, Transamination diverts the excess amino acid towards energy generation. So, if we have a lot of amino acids, amino acid का pool मैंने आपको बताया था, if you remember 100 grams, अगर वो pool में amino acids की amount बहुत ज़्यादा हो जाती है, so the amino groups are reshuffled by transamination to some other pathways. मैंने आपको बताया ना कि जो pathways keto groups take up कर सकते हैं वो ये 4 pathways हैं. So these are the 4 pathways: energy production, glucose production, fat production, and amino acid production. Okay, so the amino acids undergo transamination to finally concentrate nitrogen in glutamate, and glutamate is the only amino acid that undergoes oxidative deamination to significant extent, so much so that it liberates free ammonia for urea synthesis. So ultimately जितना भी transamination हो रहा है, that is so that's a transaminase. For example, एक amino group से एक keto group बन गया और यहाँ से जो amino group आया वो पूरे cycle से गुजर के ultimately what you obtain as a result of transamination is the glutamate compound, which is then utilized and metabolized to produce urea synthesis. All amino acids except, ये important है, इसको सुन लो, lysine, threonine, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इनके अलावा सारे ही अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन करते हैं, ये नहीं करते. ओके,
Transamination is not restricted to alpha amino groups. For instance, any other amino group can also be. So that's not an important point. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी कार्बन से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है. Serum transaminases are important for diagnostic and prognostic purposes. और ये हम पढ़ेंगे भी चैप्टर 6 में, बट यहाँ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले को बताया. AST है for example, ALT है for example. So they are important enzymes which when elevated mean something significant. Okay? So they're important parts of some diagnostic procedures. Now, a little more detail on the mechanism of transamination. It basically happens in two different stages. Number one, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू द कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. मैंने आपको बताया कि सारे ट्रांसएमिनेजेस का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. तो अमाइनो ग्रुप पहले इस पे ट्रांसफर किया जाता है and as a result we get pyridoxine phosphate, and then what happens कि the amino group of the pyridoxamine phosphate is transferred to the keto acid and the PLP is regenerated. So if you look at figure 15.4, that should tell you the whole story कि what's actually happening. So ये एक अमाइनो एसिड है जिसका अमाइनो ग्रुप निकला और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे आके अटैच होने के बाद अब उसने बना दिया पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट, और फिर इस पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट से ये अमाइनो ग्रुप ट्रैवल करेगा और एक कीटो ग्रुप बन जाएगा. सो दैट इज द कीटो ग्रुप फॉर एग्जांपल, एंड यू जनरेट अनदर अमीनो एसिड बिकॉज ट्रांसएमिनेशन में कहीं से अमाइनो ग्रुप निकलता है तो कहीं बनता है, एंड हियर यू प्रोड्यूस ग्लूटामेट. फिर ग्लूटामेट की डीएमिनेशन होगी तो यूरिया बनेगा. सो दैट्स द होल साइकिल दैट यू हैव टू रिमेंबर. All the transaminases require pyridoxal phosphate. ये बात repeat हो रही है because it's worth repeating. Vitamin B6 related component. This is important, okay? This bit here is not so important. When an amino acid comes in contact with the enzyme, it displaces lysine and a new shift base linkage is formed. The amino acid PLP shift base tightly binds with the enzyme. Snell and Boston proposed a ping-pong bye-bye mechanism involving a series of intermediates. Not important for you. Okay? अब तक जितनी बात हुई कि किस तरह ट्रांसएमिनेशन हो रही है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है पायरिडॉक्सामीन में, फिर वो अपना अमाइनो ग्रुप दे रहा है, तो यू आर गेटिंग अ कीटो ग्रुप एंड अनदर अमीनो एसिड, इन दिस केस ग्लूटामेट. दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट डिस्कशन. सो दो रिएक्शंस मुझे आज, मेरा ख्याल है टिपिकली दो ही रिएक्शंस हैं जो कवर करने हैं आज के वीडियो में. वन इज ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन के साथ कौन सा एसोसिएटेड एंजाइम है, किस तरह ये प्रोसेस होता है, एंड उसके जनरल एस्पेक्ट्स. एंड देन द सेकंड वन इज डीएमिनेशन, और ये नाम से जाहिर है. डीएमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप निकालना है. डीएमिनेशन, सो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज नोन एज डीएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली द ट्रांसफर, यानी अमाइनो ग्रुप को सिर्फ ट्रांसफर करते हैं एक अमाइनो एसिड से, यहाँ निकालते हैं एक अमाइनो एसिड से. ओके, ट्रांसएमिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली शफलिंग ऑफ द अमाइनो ग्रुप. ऑन द अदर हैंड डीएमिनेशन रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ अमोनिया. इसमें से, क्योंकि अगर ये एक हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, इसमें से अगर मैं अमाइनो ग्रुप निकाल दूं, देन यू आर लिबरेटिंग अमोनिया एंड यूरिया सिंथेसिस इज हैपनिंग. So you are not simply transferring. It's a very important concept. Try to understand this. यानी एक मेरे पास अमाइनो एसिड ये है और एक अमाइनो एसिड ये है. जब मैं ट्रांसएमिनेशन कर रहा हूँ तो ये अमाइनो ग्रुप निकल के यहाँ कीटो ग्रुप पे जाएगा, किसी न किसी, ये कीटो ग्रुप है सपोज फॉर एग्जांपल, तो अब ये कीटो ग्रुप भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वी आर सिंपली ट्रांसफरिंग द अमोनिया ग्रुप फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर. लेकिन डीएमिनेशन में ये हो रहा है कि दिस इज द कंपाउंड और इसमें से आप अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया निकाल रहे हैं. अब ये कहीं और ट्रांसफर नहीं हो रहा, एंड इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज यूरिया व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड out of the body. So deamination is different from transamination. Okay, so very super duper important concept to understand. Although transamination and deamination are separately discussed, they usually occur simultaneously. यानी जो ट्रांसएमिनेशन के रिजल्ट में ग्लूटामेट बनता है उसकी फिर डीएमिनेशन होती है और अमोनिया की तरफ बात जाती है, यूरिया की तरफ. सो दे आर हैपनिंग टुगेदर. For this particular reason, some authors use the term transdeamination because they happen together. Now, there are different flavors of it, and we need to discuss at least a little bit about, for example, number one, oxidative deamination. It is the liberation of free ammonia from the amino group of amino acid coupled with the oxidation. So, because oxidation is happening together, this is called oxidative deamination. Simple concept. This takes place mostly in the liver and kidney. The purpose of oxidative deamination is to provide ammonia for urea synthesis, as well as keto acids are generated. Role of glutamate dehydrogenase, important point. ट्रांसएमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसएमिनेजेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट.
विटामिन B6 एसोसिएटेड। तो यहाँ पर भी आपने जो एंजाइम याद रखना है क्रिटिकल इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन द अमीनो ग्रुप ऑफ मोस्ट अमीनो एसिड्स आर ट्रांसफर्ड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। ये बात हमने पहले भी की थी। देयरफॉर द ग्लूटामेट सर्व्स एज द कलेक्शन सेंटर फॉर द अमीनो ग्रुप। सो ग्लूटामेट में सारे अमीनो ग्रुप डंप होते हैं। ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज टू लिबरेट अमोनिया। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अमीनो ग्रुप को प्रोसेसिंग करके अल्टीमेटली ग्लूटामेट तक पहुंचाया जाता है, और फिर ग्लूटामेट कौन प्रोसेस करता है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, ताकि अमोनिया लिबरेट हो। दिस एंजाइम इज यूनिक in that it can utilize either NAD or NADP plus as a coenzyme. Conversion of glutamate to alpha ketoglutarate by this particular enzyme is super important in the production of ammonia. Okay, glutamate dehydrogenase catalyzed reaction is important as it reversibly link up glutamate metabolism with the TCA cycle through alpha ketoglutarate, because the product of glutamate metabolism in this case is alpha ketoglutarate, which can feed into the TCA cycle. So very, very important. Okay, and therefore glutamate dehydrogenase is not only catabolic, it's also anabolic, because it is giving alpha ketoglutarate which feeds into the TCA cycle. So anabolism. Regulation of GDH यानी glutamate dehydrogenase activity. Glutamate dehydrogenase is a zinc containing mitochondrial enzyme. Important information. Zinc containing mitochondrial enzyme. It is a complex enzyme consisting of 6 identical units with a molecular weight. ये सारी information ना भी याद रहे तो ठीक है. GDH is controlled by allosteric regulation. GDP and ADP inhibit, whereas GDP and ADP activate it. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की बात हो रही है। स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स, सो ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इनको अगर आप लिंक करने बैठोगे तो आपको समझ भी आएगा। सो इफ वी हैव ATP एंड GTP, दैट मीन्स वी हैव इनफ एनर्जी इन द बॉडी, एंड इफ वी हैव इनफ एनर्जी इन द बॉडी, परहैप्स द TCA साइकिल डज नॉट need to be overactivated. It needs to be shut down. If it needs to be shut down, the reverse engineer करें, GDH activity needs to be shut down. So ATP and GTP allosterically inhibit glutamate dehydrogenase. और जब कभी energy deficiency होगी, so you need more and more TCA cycle, you need more and more alpha ketoglutarate, you need more and more GDH activity. So it's all understandable. After ingestion of protein-rich meal, liver glutamate level is obviously elevated. आपने बहुत सारा गोश्त खा लिया, मछली खा ली, चिकन खा लिया, दालें खा ली, सीरियल्स, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है. And you get high levels of glutamate, which is converted into alpha ketoglutarate and liberation of a lot of ammonia. Further, when the cellular energy levels are low, the degradation of glutamate is increased to so same thing which I was just explaining to you. Okay, if you have energy-rich status, you have a lot of ATP and GTP, you have inhibition of the glutamate dehydrogenase system. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस. सो अभी तक हम बात कर रहे थे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की. दूसरे जो एंजाइम ग्रुप इसमें पूरे डिस्कशन में रेलिवेंट है वो है ऑक्सीडेजेस. L-amino acid oxidase and D-amino acid oxidase are flavoproteins possessing FMN and FAD respectively. So they act on the corresponding amino acids to produce alpha keto acids and ammonia. In this reaction, oxygen is reduced to hydrogen peroxide, which is then utilized by or degraded by catalysis. The activity of L-amino acid oxidase is much low while D-amino oxidase is high, particularly in liver and kidney. L-amino acids oxidases does not act on glycine and dicarboxylic. I would just skip this information. ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि the major regulator of deamination is glutamate dehydrogenase. उसकी regulation आपको, should be on your fingertips. Then if somebody asks you, are there any other enzymes which are also involved in deamination? Yes, these are oxidases. That's all. Okay. Now, the fate of D-amino acids, not important for you to remember, so you can simply skip this. So अब तक जो हम बात कर रहे थे, that was oxidative deamination, जिसमें साथ साथ oxidation भी हो रही है. Now we are talking about non-oxidative deamination. So यहाँ भी deamination हो रही है, but there is no oxidation taking place. और इसके enzyme setup अलग है. इसके जो enzymes important आपने याद रखने हैं, they include amino acid dehydrases. Hydrogenases नहीं, hydrases. Serine, threonine, homoserine, they are the hydroxy amino acids. They undergo non-oxidative. So remember which one undergo non-oxidative deamination. Okay, and these enzymes are called either dehydrases or dehydratases. So these are the amino acids that you have to remember. And in this ammonia group निकल रहा है, so deamination हो रही है, and obviously जब deamination होगी, keto acids will be produced.
Then we have amino. So this was one group, dehydrases, enzymes, which are doing non-oxidative deamination. There is another group which is called desulfhydrases. Now the sulfur amino acids, उन्हीं में होगा ना, बिकॉज ये उस पर तो जाके काम नहीं करेगा जिसमें सल्फर है ही नहीं. एंड व्हाट आर द सल्फर अमीनो एसिड्स? सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन. सो इफ यू अंडरस्टैंड द anatomy of amino acid, for example, you will understand what we are talking about. So cysteine and homocysteine, for example, if they are acted upon by desulfhydrases, they are converted into pyruvate, relevant keto group. Then there is deamination of histidine. अगर हिस्टिडीन की डीएमिनेशन होती है, देन व्हाट यू गेट इज अल्टीमेटली अमोनिया तो निकल रहा है बिकॉज डीएमिनेशन हो रही है, बट हिस्टिडीन इज देन कन्वर्टेड इनटू यूरोकिनेट. ओके, सो व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो हम बार बार जिक्र करेंगे थ्रू आउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. और वो रिएक्शंस हैं, नंबर 1 ट्रांसएमिनेशन, extremely important reaction, and the other one is deamination. Okay, तो ये दो reactions का बार बार जिक्र होगा. ट्रांसएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है, कीटो ग्रुप बनता है, दूसरा कोई कीटो ग्रुप अमाइनो ग्रुप बना देता है. और डीएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड यू गेट यूरिया एट द एंड टू बी सिक्रेटेड आउट ऑफ द. सो दिस बेसिकली डीएमिनेशन एक्सक्रीटरी पाथवे है, यहाँ से अमोनिया एक्सक्रीट होगा. और जो ट्रांसएमिनेशन है ये रेगुलेटरी या मेटाबॉलिक पाथवे है, इसमें अमाइनो एसिड सिर्फ शफल होता है, एक की टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी. These two reactions are super important क्योंकि ये नहीं समझ में आए तो आगे का जितना डिस्कशन है ना वो नहीं समझ में आएगा. सो फॉर एग्जांपल अमोनिया का मेटाबॉलिज्म, कई दफ़ा ये नाम अभी हम डिस्कस करेंगे. देखें यहाँ अभी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करनी, ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा अमोनिया, बट जस्ट हैव अ लुक हियर, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन. सो बार बार ये नाम आएगा, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर. सो आज की वीडियो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ओके, चलें यहाँ रोकता हूँ वीडियो, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.